हाय एवरीवन। ओह बहुत अच्छे से हुआ। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत टाइम से मेरे पास कोई गेस्ट नहीं है मेरे चैनल पे, पर आज फर्स्ट टाइम, नॉट एक्चुअली फर्स्ट टाइम, बट रुचिता काफ़ी टाइम मेरे कॉलेज वीडियोज़ में आई है. यू कैन चेक आउट माई कॉलेज व्लॉग्स. शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड टुडे आई इन्वाइटेड हर ऑन माई चैनल सो वी कैन टॉक अबाउट वॉट आर कॉलेज एक्सपीरियंस हैज़ बिन and we could tell you all a few things we wish we knew and talk about a few things जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, what are our personal takes on. So Ruchita, welcome to my channel. She has really supported me throughout my journey. Thank you so much. And first of all, let's start with your introduction. So I mean, how you got into architecture, bachelor's, and we are in 5th year right now. We are going to 5th year this June. So what has been your experience so far? I was in my 8th standard. I didn't used to study only. Like I used to only play. This is so contradicting to what she's right now. She's such a smart girl. You know what, guys? I'll tell you all one thing. मैं मतलब बहुत ज़्यादा डेडलाइन वगैरह नहीं इतनी इतना ध्यान में रखती हूँ ऑनेस्टली. शी इज़ द वन हु टेल्स मी कि नहीं इसका डेडलाइन है, इसका ये असाइनमेंट है, या अगर कोई असाइनमेंट है जो क्लास में नहीं आता होगा, शी विल बी द वन हु विल गेट द असाइनमेंट्स डन. शी इज़ प्रीटी गुड एट दिस एक्चुअली. इट्स वेरी ऑपोजिट टू हाउ शी इज़ टेलिंग herself. I studied 8th, 9th, then went into my 10th standard, and then you came second. Yeah, right? I came second in my school. Like it was really my parents never thought that I would come in second place in my school. My parents would have been so happy अगर मेरा कुछ होता है ऐसा, but I wasn't that good in school, so yeah. Then I got into DAV, but then I felt I took up science. Obviously, I was 11th standard का first exam हुआ. Then I realized कि no, I don't want to do science. It's not I will do science, but it's not something I want to pursue as my career option. I don't want to do that because it's not what I like. And I wasn't knowing architecture field exists. So फिर मैं architecture मैंने बहुत ढूंढा मैंने कि क्या है ये field, कैसा है ये, इसमें क्या क्या होता है. और मुझे बचपन से art में interest था. तो फिर मैंने घर पे बोला कि architecture में जाना है करके. Then I went into architecture and that was my journey. मैंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया था आर्किटेक्चर में घुसने से पहले. मैं बस किसी को जानती थी जो एक आर्किटेक्ट थी एंड मुझे बस एक फैंसी वर्ड लगा मैं चली गई. मुझे पता था पर्सनली यू कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था. a lot of people in our college also are people who wanted to get into engineering but उनका हुआ नहीं. they got into architecture because बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर डिसीजन में रहते हैं कि करना है नहीं करना. इवन मेरी क्लासेस में जहाँ मैं पढ़ती थी there were students who were doing engineering के classes also and architecture के classes also. तो एक both options are open because anyways आपको 12th में science और maths लेनी पड़ती है compulsory, so you can try for both. That was also my experience, but मैंने इतना research नहीं किया था. मुझे पता था field के बारे में but मेरे आसपास कोई था नहीं. and that was how I also got in. And how we met actually was कि first day पे I didn't remember much. Actually she tells me that she remembered me. How I remember her is that हमें ना एक्चुअली initial 2-3 days classrooms नहीं दिए गए थे. तो हमारे प्रोफेसर्स हमें इधर उधर के क्लासेस में बिठाते थे, कभी हमारे मेन हॉल में या कभी ऐसे 5th year के क्लास में ऐसा. एंड आई रिमेंबर शी वॉज द वन हु यूज्ड टू सिट डायगनली ऑपोजिट टू मी और मैं पीछे बैठती थी, ये रिलेटिवली थोड़ा आगे बैठती थी. एंड कैसा रहता है ना आर्किटेक्चर में देयर आर ड्राफ्टिंग बोर्ड्स ह्यूज, सो वी हैव टू ड्राफ्ट स्टफ. एंड फर्स्ट ईयर आई गेस मैं तेरे साइड में ही थी. साइड में थी, डायगनल नहीं थी तू? साइड में ही थी. रेलेवेशन वो बस मैं बगल में बैठती थी, मुझे याद नहीं है. बट हाँ वो मेरे साथ नहीं बैठती थी, थोड़ा दूर बैठती थी. एंड मतलब उसका काम हमेशा ऑन पॉइंट एंड रेडी रहता था. एंड इनिशियली फर्स्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा डरते थे. तो मैडम से ज़्यादा पूछने से ज़्यादा मैं रुचिता से जाके पूछती थी कि रुचिता क्या करना है. रुचिता हैज़ बीन अ सपोर्ट थ्रू आउट. हम लोग एक साथ क्या करना है ऐसा, रुचिता क्या करना है, ओके हम सेम ही चीज़ें करते. एक टाइम पे यू गाइज वोंट बिलीव हमारे प्रोजेक्ट सेम बन जाते थे.
Like, हम लोग इतना डिस्कस करते थे, हम लोग लिटरली हम लोग रात को कॉलेज होने के बाद रात को मीट पे आते थे, हम लोग डिस्कस करते थे, वो उसका डिज़ाइन ला दी थी, मैं मेरा डिज़ाइन, और फिर हम लोग क्रिटिक्स देते थे एक दूसरे को हाँ, कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। फिर उससे हम दोनों का डिज़ाइन ही सेम बन जाता था। बट सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि हमारे जूनियर्स और हमारे प्रोफेसर्स दोनों अलग थे। तो जो हमें सिखा रहा था वो अलग था, और जो हमें टेस्ट भी करने वाला था वो भी अलग था। तो हमारे डिज़ाइंस कहीं पकड़े नहीं गए। और ऐसा ही नहीं, ऐसा कोई एकदम रूडिमेंट्री लेवल से हमारा सेम नहीं था, बट बहुत कुछ सेम हो जाता था क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा डिस्कस करते थे. So yeah, this was how we met actually. So now that we talked about our own background, let us discuss about a few things you would like to recommend first year students, because a lot of our viewers are first year students, aspiring students, or students who just in general want to get into design college, but उन्हें पता नहीं कि मतलब कहाँ जाएंगे types. तो in general, because now you've been in design college for 4 years, तो तुम्हें क्या लगता है 2 things or probably 1 point which is very important for them to know? First thing I would say is time management. You should know how to manage your things, and how to manage all your extracurricular and stuff. like the second thing is related to my first one, like doing co-curricular activities. Like you should not focus only on academics but also co-curricular activities. Like you can take up courses to improve your software skills, and then like you can do workshops, seminars and all. Because I also agree with you, थोड़ा fast हो जाता है. आप अगर first year से ऐसा compulsory, like in India it is not compulsory to know softwares from first year, especially in the colleges that we have studied in. But then जब आप later stages पे start करते हो तो then it becomes really hard. Like it was really hard for us to cope up that fast with the curricular also being very hard at the same time. First year mein you think it is very hard, but it is not that much if you can take out some time and learn the simplest softwares like AutoCAD or SketchUp. Like we can understand कि सबके पास एकदम start से high level laptops नहीं होते हैं, and आपको थोड़ा time लगता है लाने में. तो if you want to start with the smaller level, you can do that. Let me ask you another question. Since you're in 4th year now and like almost half of your college life is over, although we also were a pandemic students for a very long time, what has been your most memorable moment so far? Like you remember that and you think, wow, that was a highlight of my college life. So when I was in my first year, I went to Kolkata for Indo-French workshop, and it was a really very nice workshop. Like I didn't think of, and it was the first time when I went away from my parents to some other state. Like I've never went to, like it was a very especially because emotional thing also for me, and even also, because we are day scholar students, right? So हम लोग like same city में भी, we study in Mumbai, we live in Mumbai, तो हमें एक hostel life एक तरीके से नहीं experience करने को मिलती है. Like it was very nice, and like I documented a lot of things there in Kolkata. Like it was my first site documentation thing I did there. We did so many night outs there for making the sheets and all. हम लोग like seniors के room में जाते थे, हम लोग पूरा बैठ के सब लोग एक साथ बैठ के sheet document करते थे. मैं sketches बनाती क्योंकि मैं first year student थी, तो मुझे तो कोई software तब आता नहीं था. hand drawn sketches होते थे ना, तुम लोग के पूरा site documents मैंने देखा था तुम लोग का presentation. तो पूरा बहुत ज़्यादा hand documentation ज़्यादा था, तो फिर मुझे तो कोई सॉफ्टवेयर आता नहीं था, तो फिर फोटोशॉप वो सब तो कुछ नहीं. तो मैं पूरा स्केचेस ड्रॉ करके वो सब फिर इंटरैक्ट करके सब डॉक्यूमेंट करके मैं लाती थी. हाउ वाज योर इन जनरल लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स? उससे व्हाट डू यू थिंक वाज, डिड इट एनीथिंग इफेक्ट दैट यू वेंट ऑन दीस टूर्स in your first year? Like first of all मुझे like मैं इतने लोगों से तब इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी जब like फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में वो मेरा फर्स्ट ये था कि मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने इंटरेक्ट किया लोगों के साथ. फिर इवन मैं कॉलेज में भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट की थी, तो उससे मेरा like मैं सोशल होने लगी ज़्यादा. अभी जब एग्जिबिशंस हुए तब I used to explain the sheets and all. If you guys get an opportunity, try to go for these workshops or anything for that matter, whatever happens in your college. And this is not just for design students, this is for anyone who's watching us, because in general I also think the more you go out through these workshops, these seminars, something, you get a lot many good experiences.
Your internship also got over recently. Yeah. And if you guys don't know, we are in 8th semester at the moment, and in architecture 8th semester is an internship period in Mumbai University. So in all other universities the procedure might be different. तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि for 90, 100 or 120 days you have to work in an office, and you'll get the practical knowledge and everything, and then you have to compile all your work in a portfolio and submit it and have a discussion with your juror, and that's all your 8th semester is about before you start working on your thesis. So you just finished your 90, 100 days, and what has been your experience? Because a lot of people say, especially in college, if you guys are there in college, I don't know, but we have heard that the professional life is very different from the yeah. academic life. What do you think about it? It's really true that professional life is your like is different from your college life. Like for example, तुम कॉलेज में कभी भी बंक मार के घर पे जा सकते हो. I swear. बट ऑफिस में बैठ के नहीं. Like उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं कॉलेज में, बिकॉज इंटर्नशिप पे यू फील लाइक डम शॉक्ड, लाइक ऐसा लगता है क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. बट या आई थिंक जितना आप इंटर्नशिप करोगे इट्स वेरी हेल्पफुल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटर्नशिप्स और लाइक इन जस्ट इन जनरल अबाउट वर्किंग एंड डूइंग कॉलेज? लाइक हाउ डू यू थिंक इट कैन बी डन? एकेडमिक्स और इंटर्नशिप करना इज़ लाइक अ रियली वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि एकेडमिक्स में तुम कितना भी लाइक फ्री माइंड से तुम डिज़ाइन कर सकते हो या, बट अगर तुम इंटर्नशिप में देखोगे तो तुम लोग को क्लाइंट के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, और क्लाइंट बार बार चेंज करवाता है डिज़ाइन. थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट everything. You have to go for practical knowledge and work in professional life to you actually find. I think remote working भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, so you guys can also try working remotely alongside your academics. And ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर semester करना चाहिए. If you think that you have a little time, you can do it for 1 month, 2 month. I have in general seen कि जिन लोगों ने पहले से ही internship करनी start कर दी थी, they are much more aware about what is happening in the market, and they really get a reality check faster than others. So yeah, with this we come to the end of the video. Thank you so much, Ruchita. If you guys are interested to know more about design school or anything in general about design, about architecture in general, do tell us in the comments. And if you all have any specific questions in general is video ke liye or anything like that, you can tell us in the comments too. Yeah, that was it, and we shall see you guys in the next video. Bye.